The next topic is parabola. So what is a parabola? If you define a parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from fixed line and fixed point which is no, which is in the fixed point in the plane, not on the line. So there are some terms which we have kept in our mind. One is fixed line. This fixed line is called directrix of parabola. The term f is used here, that is the fixed point. F is called the focus, this one. And a line through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of parabola. The point of intersection of parabola with axis is called vertex of parabola. So if you see this diagram, you will find that on this is focus, this is the axis along which the parabola exists, this point is vertex, and this line is called directrix. So there are four kinds of parabola. One is right side open, left side open, upward open, and downward open. If you consider the first kind, first equation is y square is equal to 4ax. In this the focus is a0. It is right side open. Equation of directrix, x is equal to minus a. This is directrix. And similarly here it is left hand side open. So y square is minus 4ax. Y square is minus 4ax is left side open. Focus will be minus a0. Then x square is equal to 4ay. X square is equal to 4ay. It is upward open. फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0a. एंड x square is equal to minus 4ay. This will be downward open, downward parabola. So depending upon these, one term is more very important, that is latus rectum. So latus rectum, basically definition of latus rectum, it is a line segment which is perpendicular to the axis, passes through the focus, and ends in the boundary of parabola. Latus rectum is a line which passes through the focus. Latus rectum is a line which passes through the focus and ends at the boundary of a parabola. So let we have another representation. We are having, as I have shown you, four kinds of parabola. Y square is equal to 4ax, right hand parabola, right side open. Y square is equal to minus 4ax, that is left hand side, left hand parabola. Upward parabola, x square is equal to 4ay, and x square is equal to minus 4ay, downward parabola. Now let we have the coordinates, different terms. One is vertex. Vertex of all are 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 0, 0. Coordinate of focus, right side में a0, then left में minus a0, upward में 0a, downward में 0 minus a. Equation of directrix will become x is equal to minus a, x is equal to plus a, y is equal to minus a, and y is equal to plus a. Length of latus rectum in all cases is 4a. Latus rectum is the line which passes through the focus and ends at the boundary of parabola, whose end point lies on the parabola. Then equation of axis, जिसमें square है, y square is equal to 4ax, then y is equal to 0, y square minus 4ax, y is equal to 0, x square 4ay, x is equal to 0. This is equation of axis. And x square is equal to minus 4ay, so x is 0. Then equation of latus rectum. Equation of latus rectum is x is equal to a, x is equal to minus a, y is equal to a, y is equal to minus a. Now this is our right hand parabola, in which the
Parabola is right hand open. Equation will be y square is equal to 4ax, first standard equation. Vertex will be 0 0. A0 is the coordinate of focus. Equation of directrix x is equal to minus a या x plus a is equal to 0. Length of latus rectum is 4a and equation of axis will be y is equal to 0. Equation of axis is y is equal to 0 and equation of latus rectum will be x is equal to a. So in the similar way we can find y square is equal to minus 4ax. Y square is equal to minus 4a. Y square is equal to 4ax. Y square is minus 4ax. Y square is minus 4ax. X square is equal to 4ay and x square is equal to minus 4ay downward. So let me start the exercise. Questions are quite simple. The first question is you have to write in each case coordinate of focus, axis, equation of directrix and length of latus rectum of parabola. So first equation is y square is equal to 12x. So clearly the sign of a is positive, so it will be right hand open या right hand parabola. So if we compare with the equation y square is equal to 4ax, we will find 4a is equal to 12. So a will be 3. Therefore the coordinate of focus in this case is a0. So it is 3 0. Equation of directrix x plus a is equal to 0. That is x plus 3 is equal to 0. X plus 3 is equal to 0. X is minus 3. Length of latus rectum 4a means 4 into 3 12. Axis of parabola जिसमें स्क्वायर होता है y स्क्वायर है तो y is equal to 0. Second is x square is equal to 6y. Now x square is 6y. This will be upward open. X square is equal to 6y. Y square is equal to 12x is right hand. X square 6y upward open. So if you compare upward की equation होती है x square is equal to 4ay. So compare 4a by 6. You will get a is equal to 3 by 2. In this case, the coordinate of focus will be 0 and a. It is 0, 3 by 2. Equation of directrix इसमें होती है y plus a is equal to 0. So y plus 3 by 2 is equal to 0. Length of latus rectum वो सेम ही रहती है 4a. 4 into 3 by 2 that is 6. ये 2 2s are 4 cancel हो गया. And last is equation of axis जिसमें है x जिसमें स्क्वायर है x स्क्वायर. सो इट इज x इज इक्वल टू 0. सिमिलरली चेक थर्ड क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x. माइनस a इज माइनस, सो इट विल बी लेफ्ट और y स्क्वायर में है, सो इट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड ओपन. सो इट इज लेफ्ट हैंड ओपन. सो कंपेयर 4a minus 4a is equal to minus 8. So a will be 2. Coordinate of focus in this case is minus a0. So it is minus 2 0. Equation of directrix x minus a is equal to 0. So x minus 2 is equal to 0 या x is equal to 2. Length of latus rectum सेम रहती है 4a. 4 into 2 8. Axis of parabola जिसमें स्क्वायर है. इक्वेशन आएगी y is equal to 0 तो एक्सिस बन जाएगी x एक्सिस. Question number 4 is x square is equal to minus 16y. So if you compare it, x square is equal to minus 16y. If you compare it as x square minus 4ay, it will be y का कोफिशिएंट जो है वो माइनस है यहाँ पे, a का जो कोफिशिएंट है और x स्क्वायर में है. So it will be downward open. So compare 4a is equal to 16. So a will be 4. फोकस के कोऑर्डिनेट इस केस में होते हैं 0 माइनस ए, डाउनवर्ड ओपन. सो 0 minus 4. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y minus a is equal to 0.
y minus a is equal to 0, so y is equal to 4. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही रहती है सेम 4a, 4 इंटू 4 16. एक्सिस ऑफ पैराबोला जिसमें है ये एक्स स्क्वेयर में है तो एक्सिस विल बी वाई एक्सिस या एक्स इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होगी, ये एक्सिस होगी. देन द क्वेश्चन नंबर 7 इज यू हैव टू राइट, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू राइट द equation of parabola. Write the equation of parabola whose focus is 6 0. Directrix x is equal to minus 6. So if we compare, a will be focus के coordinate होते हैं a 0. So a is 6 और 6 0 जो है वो lies करता है on x axis. So required equation हमारी बनेगी y square is equal to 4ax. 6 जो है वो पॉजिटिव है, 6 0 x एक्सिस पे पॉजिटिव है तो फर्स्ट काइंड बनेगी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला. सो इट इज़ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यहाँ से हमने 6 निकाल लिया, 6 इंटू एक्स 24x. क्वेश्चन नंबर 8 इज फोकस इज 0 3, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3. 0 माइनस 3 पॉइंट चेक करना है कहाँ लाई करता है, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में भी ये डाउनवर्ड है 0 माइनस 3. सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 4ay बनेगी. ए यहाँ से 3 है ही है, फोकस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 माइनस ए है, सो ए 3 आ गया. सो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर 4 इंटू 3 12y. Then question number 10th is vertex 0 0 focus minus 2 0. vertex तो 0 0 है तो focus minus 2 0 है. minus 2 0 lies on x axis but in the left hand side, origin से left hand side. so equation बन गई y square is equal to minus 4ax. a 2 है, फोकस के कोऑर्डिनेट a 0 होते हैं तो फोकस a जो है वो 2 हो गया. सो इक्वेशन बन गई y स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2x यानी कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8x. क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन देन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 इज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. We have to find the equation of parabola. Vertex is 0 0 and it passes through 2 3. Passes through 2 3. And axis is x axis. Axis is along x axis. So as it is along x axis, so parabola is either y square is equal to 4ax or y square is equal to minus 4ax. But it passes through point 2 3. 2 3 lies in first quadrant. So it must be राइट हैंड पैराबोला. दैट इज इक्वेशन उसकी बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अब जो पैराबोला है वो 2 3 से पॉइंट से पास होता है, सो x और y की जगह 2 3 पुट करके a निकाल सकते हैं. a इज 9/8. सो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5 2 and axis is y axis. So as axis is y axis, so therefore required equation जो है वो हमारे पास हो सकती है, वो उसने बोला it is symmetric with respect to y axis, तो it is x square. So as the axis is y axis, so required equations will be x square is equal to 4ay या x square is equal to minus 4ay. अब पॉइंट जो है वो 5 2 है, 5 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट मस्ट बी अपवर्ड ओपन. 5 2 से पास होता है तो 5 2 अपवर्ड ओपन है. सो एज और वर्टेक्स जो है वो 0 0 है, सो एज 5 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज अपवर्ड ओपन. अपवर्ड ओपन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay. अगेन इट पास थ्रू 5 2. एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2 पुट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a 25/8. So equation of parabola will be x square is equal to 4a 25/8 into y. ये कैंसिल होकर x square is equal to 25/2 y रहेगा. थैंक यू.